Good evening. Good evening, everyone. Voice ठीक ठाक अच्छी voice audible टिके खाली confirm करो. Good evening, जय जगन्नाथ. Video and audio clearly visible. टिके confirm करो खाली. Then हमें class start करिबा. Sir प्रणाम. Yes, कान्हा 48 watching. प्रीति जोशना तृप्ति अर्चिता. ओके तो स्टार्ट करिबा. 50 हे गले स्टार्ट कर दबा. आ एग्जाम भी अल्प दिन रहिला तमरो. बाकी किछि पानिक खबर नाही. जहा हबो देखा जियो. मधुस्मिता, संजिता, मित्तु. चलो गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. ओके चलो स्टार्ट करिबा. ठीक अछि. तो फर्स्ट क्वेश्चन तम पाखे जदी देखो ता प्रीवियस क्वेश्चन रेडी कर दो कि. अच्छा ये क्वेश्चन रा 17 नंबर क्वेश्चन रा कोन हबो. रेस्पिरेशन रो क्वेश्चन. During which stage in the complete oxidation of a glucose are the greatest number of ATP molecules formed from the ADP? को स्टेप रो जनरली जो हमरो को स्टेप रे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हुए और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटीपी मिले. कौन हबो को आंसर. चलो आंसर दियो फटाफट. कौन हबो हमें जानि छे. दैट इज व्हिच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटीपी. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन. बढ़िया इजी क्वेश्चन. कौन हबो. डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अच्छा मते को कि जनरली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नीट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एथर को 2024 रो क्वेश्चन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कोठी हुए. साइटोप्लाज्म ना मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ना इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. वेयर इन व्हिच स्ट्रक्चर और इन व्हिच following option is responsible for the electron transport chain. Inner membrane of mitochondria. कौन हबो आंसर. कोठी जनरली हुए. इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. विजयलक्ष्मी एंड अभिप्सा कान्हा. बढ़िया. इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हुए. देन मते नेक्स्ट को मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रे कोन हुए. मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रे कोन हबो. मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रे कोन हबो. ग्लाइकोलिसिस ना क्रेब साइकिल ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. कोन हबो जनरली कोटा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रे हुए. परफेक्ट समझती करो. मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रे ग्लाइकोलिसिस. मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज क्रेब साइकिल. स्ट्रिक्टली मन रखिबो. ग्लाइकोलिसिस ता जनरली कोठी हुए. ग्लाइकोलिसिस हुए हमरो साइटोप्लाज्म रे. क्रेब साइकिल हुए मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रे. देन होची इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हुए इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रे. चलो ग्लाइकोलिसिस रो को स्टेप रे मते को कि जनरली इन हुई स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस. नो सिग्नल. टिके हमें गोटे मिनट वेट करिबा. देन हे जिवो. वीडियो इज नॉट कमिंग. यस यस वीडियो इज नॉट कमिंग. 2 मिनट वेट करो. संगे संगे हे जिवो. जस्ट 2 मिनिट्स. यस यस देखली 2 मिनट रुओ.
ओनली 2 मिनिट से भीतर आंसर दियो। अच्छा तापर मते को कि जनरली ग्लाइकोलिसिस रो को स्टेप रे एटीपी टा यूटिलाइज हुए इन व्हिच स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस तो एटीपी विल यूटिलाइज्ड जनरली ग्लाइकोलिसिस रो को स्टेप रे एटीपी यूटिलाइज हुए आंसर दियो। इन व्हिच स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस एटीपी विल यूटिलाइज्ड को स्टेप रे एटीपी यूटिलाइज होबो देखुछ देखुछ in which step of glycolysis glucose ru glucose 6 phosphate जो step रहिला then fructose to fructose 1,6 bis phosphate तो ये जो step दीटा रहिला ए step रे generally कौन हुए ना ATP रो utilized हुए glucose to glucose 6 phosphate and fructose 6 to fructose 1,6 bis phosphate and generally को step रे stop streaming को step रे that is ATP utilized हुए आंसर दियो जेमति हमें कहले जनरली ग्लाइकोलिसिस रो जो स्टेप ग्लूकोज रो ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 6 रो फ्रुक्टोज 1,6 bis फास्फेट से जगह रे एटीपी टा यूटिलाइज हुए देन को स्टेप रे जनरली एटीपी रिलीज हुए कोन हो सत्यम सूरज आंसर दियो को स्टेप रे दैट इज ग्लूकोज टा जनरली रिलीज होबो कौन पाइबा ठीक है कंफर्म करो कि हे गला बोली नाउ वीडियो इज स्टॉप वर्किंग तृप्तिमयी प्रभानी श्रद्धा अर्चिता ऑडियो एंड वीडियो तुमको क्लियरली विजिबल ना किछि ब्लर आछि ना किछि ऑडियोटा ठीक से सुना जाउनी अंकिता एमडी कौशर नाउ विजिबल बट नॉट ऑडिबल ऑडिबल होनी एगला क्लियर नाउ ऑल क्लियर ओके चलो तो चलो क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैचड जनरली को पेयर टा करेक्टली मैच हेनी देखो विटामिन रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दियो विटामिन सी विटामिन B2 विटामिन B12 विटामिन B6 को कोन आंसर आंसर जे कोन हो विटामिन सी विटामिन B2 विटामिन B12 विटामिन B6 कोटा होची करेक्टली मैच नुह विटामिन रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दियो समस्त आंसर डी आज हम जानि छे दैट इज विटामिन B1 अदरवाइज कॉल्ड एज थियामिन एंड विटामिन B1 रो डेफिशिएंसी ले कोन होबो बेरी सेम थी दैट इज हम जानि छे विटामिन B2 इज अदरवाइज कॉल्ड एज राइबोफ्लाविन केलियोसिस तो बट एटी पचार छी विटामिन B1 डेफिशिएंसी very हुए बट विटामिन B6 इट इज इनकरेक्ट B12 इज कॉल्ड एज कोबालामाइन सियानोकोबालामाइन को कहि परिबो एंड विटामिन B12 रो डेफिशिएंसी पर्नेसस एनीमिया ठीक अछि विटामिन B2 रो डेफिशिएंसी पेलाग्रा विटामिन C बा जा को हम एस्ट्रोबिक एसिड बोली कहू छे दैट इज रो डेफिशिएंसी स्कॉर्बे तो ठीक अछि इनकरेक्ट होछि डी ठीक अछि चलो बढ़िया ठीक अछि एबे समझि करो चलो जदि हमें एट तुम क्वेश्चन गोटे पचारिया वीडियो भी ठीक ठाक चलछि तो ओके देन जो देखिबा ए क्वेश्चन आंसर देलो कोन हबो all the enzymes of a TCA cycle are located in the mitochondrial matrix except one which is located in the inner membrane of mitochondria TCA cycle ba generally hame jodi kahiba Krebs cycle re all the enzymes are present in the matrix of mitochondria as you know that is the TCA cycle or the okay Amaji Krishna TCA cycle
or Krebs cycle occurs in the matrix of mitochondria. So जेहेतु Krebs cycle टा matrix of mitochondria होची तो that is सब जगह enzyme matrix of mitochondria presented अछि but को enzyme टा that is matrix of mitochondria present नहीं inner membrane of mitochondria present exception succinate dehydrogenase. बढ़िया आंसर succinate dehydrogenase important. चलो next बा during the prolonged fasting in what sequence are following organic compounds used by the body. Generally जेतले जने prolonged fasting करिवो किछि खाइबोनी को sequence रे body रो जो जिंस गुडा का digested होबा start हबो. 46 watching आंसर कोन हबो कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन. समस्त आंसर ए एमडी कौशर सार्थक ए. प्रथम होची कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट हबो तापर फैट डाइजेशन स्टार्ट हबो लास्टली प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट हबो एंड जेतेबेले प्रोटीन डाइजेशन बॉडी रे जति प्रोटीन थिबो सब कंप्लीट हे जिवो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन डाइजेशन तो कोन हबो ऑटोमेटिकली हमरो डेथ हे जिवो. ठीक अछि तो फर्स्ट होची कार्बोहाइड्रेट देन फैट देन प्रोटीन. चलो नेक्स्ट बा stool of a person is whitish gray colored due to the malfunction of which of the following organ. Generally हमर जो झाड़ा बा stool रो कलर टा whitish gray तो काहार malfunction जोगु बा जहा काहार deficiency जोगु बा काहार disorder जोगु ए जिंसटा होउची एंड जदी हमें जनरली जानि छे stool रो कलर टा कोन yellowish कलर झाड़ा रो कलर टा yellowish तो yellowish कलर हबा बदल रे जदी white कलर झाड़ा होउची ताहले जनरली काहार माल फंक्शन हेछि कोन आंसर लिवर परफेक्ट राइट लिवर. हमें जानि छे जनरली लिवर रे जो रिलीज कोन करे. अच्छा मते क्वेश्चन एडी को कि काहे कि लिवर टा माल फंक्शन हेइ पारे. लिवर जनरली रिलीज करे कोन ना बाइल एंड हमें जानि छे बाइल जो रहिला बा बाइल जूस जो रिलीज करा लिवर बाइल रे बिलिरुबिन बिलिवर्डिन तो ये जो पिगमेंट्स गुडा रहिला जनरली स्टूल रो कलरिंग पई हेल्पफुल. मते कोइ कि जनरली बाइल्स आर स्टोर्ड इन व्हिच ऑर्गन बा हमें कहि परे स्टोरेज ऑर्गन ऑफ बाइल इज व्हिच ऑर्गन इज जनरली स्टोर द बाइल. कोन आंसर व्हिच ऑर्गन स्टोर द बाइल बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन दीज आर द बाइल पिगमेंट एंड जनरली बाइल पिगमेंट्स आर important for the coloring of your stool. So in deficiency of a bile pigment the stool color is whitish right. Gallbladder is the storing organ of bile. So हमें कहि परा bile is secreted from liver and stored in gallbladder. तो मते कोइ कि जनरली जदि हमें क्वेश्चन पचरिया लिवर को नेकिरी what is hepatopancreatic duct and generally in which structure of small intestine hepatopancreatic duct small intestine रो को स्ट्रक्चर को ओपनिंग हुए and what is hepatopancreatic duct and hepatopancreatic duct small intestine रो जो पोर्शन को ओपनिंग हुए सेठी को स्फिंक्टर लोकेटेड. कोन आंसर तीनटा क्वेश्चन आंसर दियो. what is hepatopancreatic duct जनरल hepatopancreatic duct ता को पोर्शन को ओपनिंग होउची एंड ओपनिंग पोर्शन होउची कोन ना duodenum परफेक्ट. हमें जानि छे स्मॉल इंटेस्टाइन रो पार्ट होउची दैट इज duodenum jejunum and ileum. Duodenum area को hepatopancreatic duct बा हमें कहि परा the duct from the pancreatic duct plus the common bile duct combine together to form the hepatopancreatic duct. Hepatopancreatic duct will open to the duodenum and there is a sphincter is located called as pylotic sphincter na sphincter of Oddi na cardiac sphincter of Oddi right. समस्त your answer perfect sphincter of Oddi. स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. चलो अच्छा मते को कि जनरली बाइल सॉल्ट is important for the emasculation of protein, important for the emasculation of fat, important for the emasculation of carbohydrate. What is your answer here? Bile salt is important for the protein, emasculation for the carbohydrate, na protein na fat. Answer samasthikar Nitish right, that is for the emasculation of fat. Next question jiba
continuous bleeding from an injury part body is due to deficiency of generally गोटे बॉडी रो पार्ट रू इंजुरी पार्ट रू एक्सेस ब्लीडिंग होची कहार डेफिशिएंसी होबा फल रे विटामिन ए ना विटामिन बी ना विटामिन ई ना विटामिन के एटा आंसर दियो आकु नै गिरी चारटा क्वेश्चन पछारिया देन आकु बुझे कोन आंसर emasculation of fat man others improper breakdown vitamin k right answer is vitamin k मते को कि vitamin a deficiency ले कोन हबो देन मते को कि b और c vitamin b और c water soluble ना fat soluble third question vitamin B9 और B12 आरबीसी रो मैच्योरेशन रे हेल्पफुल ना हेल्पफुल नुह देन रिकेट्स को विटामिन रो डेफिशिएंसी रे हुए कोन आंसर आंसर दियो फटाफट विटामिन ए डेफिशिएंसी ले कोन हबो नाइट ब्लाइंडनेस कलर चेंज करके आंसर दो समस्त का आंसर ठीक अछि नाइट ब्लाइंडनेस बा अंधारा कोना परफेक्ट विटामिन बी और सी होचंदी कोन जनरली वाटर सॉल्युबल आउ कीडा के ई डी ए एमान होचंदी फैट सॉल्युबल मन रखो कीडा होची फैट सॉल्युबल बी सी होची वाटर सॉल्युबल विटामिन B9 एंड B12 B9 इज द फोलिक एसिड B12 इज सियानोकोबालामाइन ए दीटा होचंदी रेस्पोंसिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी यस देन रिकेट्स होची विटामिन डी डेफिशिएंसी ले परफेक्ट मते को कि जनरली फिब्रिनोजेन कन्वर्टेड हबो फिब्रिन को बाय कहा द्वारा प्रोथ्रोम्बिन ना थ्रोम्बिन व्हिच वन इज इंपोर्टेंट टू एक्टिवेट द इनएक्टिव फिब्रिनोजेन टू द एक्टिव फिब्रिन कोन आंसर इनएक्टिव फिब्रिनोजेन को एक्टिव फिब्रिन कन्वर्ट करे किए ओके 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 श्रद्धा कौन आंसर दैट इज थ्रोम्बिन परफेक्ट प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन रे कन्वर्ट करे किए थ्रोम्बोकाइनेस काले हम पढितले टिके लिखि दी थ्रोम्बोकाइनेस थ्रोम्बिन कोन करे ना फिब्रिनोजेन को फिब्रिन रे कन्वर्ट करे सो आंसर कोन हबो थ्रोम्बिन चलो देन मते को कि जनरली सपोज lymphatic vessel टा जदि हमें क्वेश्चन पचारिबो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को नै कि वेन रे ड्रेनेज सिस्टम बळे काम करे ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरी रे पहुंचाए ना डीऑक्सीनेटेड ब्लड को आर्टरी रे पहुंचाए कोन हबो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ lymphatic vessel कोन आंसर जनरली डीऑक्सीनेटेड ब्लड को नै कि वेन रे पहुंचाए ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नै कि आर्टरी ना डीऑक्सीनेटेड ब्लड को नै कि आर्टरी रे परफेक्ट ए द डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द वेन देन मते को कि दैट इज आर्टरी और वेन जदि दी जनकर लुमेन रो डायमीटर देखिया लुमेन डायमीटर ऑफ बोथ आर्टरी एंड वेन कहार लुमेन रो डायमीटर टा अधिका कहार लुमेन रो डायमीटर टा कम जदि हम देखिबा सपोज दिस इज द आर्टरी एंड आर्टरी रो लुमेन जो देखिबा बेसिकली आर्टरी रो लुमेन रो डायमीटर अधिका ना 1 मिनिट सपोज आर्टरी एंड वेन को कहार लुमेन रो डायमीटर टा अधिका आर्टरी और वेन भितरे आर्टरी स्मॉल वेन लार्ज दैट इज जो लुमेन रहला लुमेन रो डायमीटर टा होची आर्टरी रे होची स्मॉल और वेन रो लुमेन होची दैट इज लार्ज परफेक्ट मते को के आ गोटे क्वेश्चन एडी जो तो पछरिया एट द alveolar साइट बा alveolar साइट जगह रे alveolar साइट रे जनरली को लेयर देखिए व्हाट आर द 3 layers responsible for the diffusion of oxygen to the blood को ऑक्सीजन रो डिफ्यूजन होवा पई
कौन तीनटा लेयर रेस्पोंसिबल एट द अल्वेओलर साइट कौन हबो squamous epithelium of alveoli, endothelium of blood vessel and the basement membrane between them. Nitish perfect. Endothelium of a blood vessel, squamous epithelium of alveoli and the basement membrane between them. ये generally तीनटा layer देखी diffusion हबो ठीक अछि चलो बढ़िया देन मत को कि व्हाट इज एम्फाइसीमा व्हाट इज एम्फाइसीमा कौन दिस इज ए डिजॉर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ना दिस इज ए डिजॉर्डर ऑफ ब्रीदिंग बा हम जदी कहबा दिस इज ए डिजॉर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मझिरे मझिरे एटा बंद होउछ ना जानि पड़ सिगरेट स्मोकिंग सरस्वती परफेक्ट ड्यू टू द सिगरेट स्मोकिंग द alveolar wall get decrease alveolar wall टा आस्ते 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 डिक्रीज हे जिवो ड्यू टू द सिगरेट स्मोकिंग दिस इज कॉल्ड एज एम्फाइसीमा देन मते को कि मु तुमको ऑप्शन दोची चारटा को ऑप्शन टा जनरली यूज करा जाय फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा मन अछि दैट इज व्हिच वन इज इंपोर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा पई जो मानकर मन थिबो दैट इज तमे जतले पढिथिबो रोजी 2.4 ग्राम पर लीटर ट्रांसजेनिक बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रे एंटी ट्राइप्सिन गोटे पढिथिबो तमे कार मन अछि बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रे दैट इज एंटी ट्रिप्सिन 1 गोटे पढनथिलो एंटी ट्रिप्सिन अल्फा 1 इंपोर्टेंट फॉर द अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन मन पड़छ ना अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन रे तुम पढिथिबो अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन इज इंपोर्टेंट टू क्योर द एम्फाइसीमा रिलेट करी पढो हला एम्फाइसीमा को क्योर करिया पे कोन अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन परफेक्ट देन मते को कि जनरली हमर जो साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए कौन पर्पस थिला एमआरएनए साइलेंसिंग रो कांसेप्ट कौन एनीवन जनरली एमआरएनए साइलेंसिंग बा साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए बा आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक ता कौन पई करा जायतिला अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन आंसर समस्त को बढ़िया अछि देन मते को कि जनरली हमें जो आरएनए इंटरफेरेंस बा साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए ए जो टेक्निक ता करथिले कौन पई करथिले मात्र 83 वाचिंग इतने कम पिला कोन जते एग्जाम पाखे पाखे आसी पिलांगर सीरियसनेस बॉडी बढ़ी जाउछ ना ओके तो चलो कौन हबो टोबैको मोजाइक वायरस प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स रेजिस्टेंट टू नेमाटोड जनरली जो नेमाटोड थिला गोटे टोबैको प्लांट को जदि तुम फार्मिंग करछो एंड टोबैको प्लांट रो रूट को गोटे नेमाटोड खाई दोतला से नेमाटोड होची किए मेलाडोजाइन इनकॉग्निसिया टोबैको प्लांट रो रूट को ये आसी पारे ग्रेसफुल आसी पारे तो रूट को प्रोटेक्ट करिया पई टोबैको प्लांट रो जो रूट मेलाडोजाइन इनकॉग्निसिया टारू बा नेमाटोड टारू बचिया पई एमआरएनए इंटरफेरेंस कराइतला बा साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए कराइतला परफेक्ट देन चलो नेक्स्ट जीवा व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी सीक्रेट हार्मोन देखा जाउनी कोन सिक्रेटिन को पार्टा जनरली सीक्रेट करे स्टोमक इसोफेगस इलियम ना दुओडेनम व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी जनरली सीक्रेट करिवो सिक्रेटिन कोन आंसर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वायरस लक्ष्मीप्रिया आरएनए इंटरफेरेंस हमें करथिले फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द टोबैको रूट फ्रॉम द नेमाटोड मेलाडोजाइन इनकॉग्निसिया कोन हबो दुओडेनम समस्त का आंसर वॉइस ऑफ कृष्णा डी duodenum राइट हम जदी कहबा सिक्रेटिन इज duodenum चलो to which of the following families do folic and the pantothenic acid belongs folic acid होची कोन विटामिन B9 and pantothenic acid B5 तो जनरली ए जो B आसिला B9 and B5 तो ए जिंस गुडा जनरली को फैमिली अंडर रे जाउछंती विटामिन C ना विटामिन के ना विटामिन B कॉम्प्लेक्स ना विटामिन A कौन आंसर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स राइट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स परफेक्ट अच्छा मते आ भीतर को कि जनरली कहार डेफिशिएंसी हेले जेरोथालामिया हबो
एटी को जेरोथैलेमिया जनरली कहा डेफिशिएंसी हबो जेरोथैलेमिया आंसर दियो जेरोथैलेमिया कहा डेफिशिएंसी हबो फटाफट आंसर दियो अर्जिता कौन हबो आंसर जेरोथैलेमिया इज कॉज्ड बाय द deficiency of vitamin A परफेक्ट समस्त का आंसर विटामिन ए चलो नेक्स्ट देखो तार आंसर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है बट मु जो जेरोथैलेमिया कहली तार आंसर होची विटामिन ए यार आंसर होची विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बट जेरोथैलेमिया होची विटामिन ए चलो नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच कोटा विटामिन ए जेरोथैलेमिया विटामिन डी रिकेट्स विटामिन के बेरी बेरी विटामिन सी स्कॉर्बे आंसर आसीबो इजी क्वेश्चन अछि दैट इज हम जानि छे विटामिन के टा बेरी बेरी नुह विटामिन के दैट इज ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो बा ब्लड क्लॉटिंग टा डिक्रीज हो बा टाइम लागिवो एंड बेरी बेरी द डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 बा थियामिन व्हाट इज थियामिन एंड व्हाट इज थायामिन एनीवन व्हाट इज थियामिन एंड व्हाट इज थायामिन थियामिन कोन एंड थायामिन कोन थियामिन कोन एंड थायामिन कोन कार मन अछि व्हाट इज थियामिन एंड व्हाट इज थायामिन व्हाट इज थियामिन एंड व्हाट इज थायामिन कोन हो थियामिन कोन एंड थायामिन कोन ब्लड क्लॉटिंग बाय विटामिन के नमस्कार नमस्कार नमस्ते एमडी कौसर नमस्ते पंचानन आंसर कौन हो व्हाट इज थियामिन एंड व्हाट इज थायामिन एनीवन हु कैन से थियामिन इज ए प्यूरिन थियामिन इज ए नाइट्रोजनस बेस yes right generally thiamine is a nitrogenous base and thiamine is a vitamin thiamine is a vitamin and thiamine is a nitrogenous base वॉइस ठीक ठाक आछि थियामिन इज ए विटामिन ओके थायामिन टा जनरली कोन thiamine there is a nitrogenous base and thiamine is a vitamin को विटामिन विटामिन B1 चलो मते एटी आंसर दियो मेटामोरिज्म को फाइलम गुडा को शो करिवे मेटामोरिज्म देन को फाइलम शो करिवो मेटाजेनेसिस देन व्हाट इज मेटास्टासिस देन व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस काली डिस्कशन करथिले को मेटामॉर्फोसिस कोन मेटास्टासिस कोन मेटाजेनेसिस कोन एंड मेटामोरिज्म कोन किए मेटामोरिज्म शो करिवो किए मेटाजेनेसिस शो करिवो किए ओके दैट इज हम जानि जे मेटामोरिज्म शो करिवो एनिलिडा आर्थ्रोपोडा एंड कोडाटा and alternation of generation that is metagenesis will show Coelenterata or Cnidaria जोटा हमें जानि छे polyp produce medusa sexually and medusa form polyp sexually and the example is ovelia perfect then what is metastasis हमें जानि छे the spreading nature generally जो हमें benign tumor and malignant tumor तो benign tumor and malignant tumor is there so malignant tumor जो spreading करे बा spread ही जाए that is called as हमरो spreading nature that is called as metastasis property and then होची metamorphosis जोटा कि larval stage रो adult stage हमारे जो changes हुए that is called as metamorphosis perfect then मते को कि Coelenterata Ctenophora Platyhelminthes ए माने आंको भीतर किए radial symmetry show करिवो and किए bilateral symmetry show करो among Coelenterata Ctenophora and Platyhelminthes that is which phylum will show radial symmetry and which phylum will show bilateral symmetry कोन आंसर larva to adult समस्या ठीक अछि बढ़िया को आंसर एग्जाम जो दिन थिबो तमरो पाखा पाखी जो दिन एग्जाम तमरो हबो ता पूर्व दिन 4 पूर्व दिन पूरा गोटे रखिया सेशन पूरा अधिका टाइम पड़ो 2-3 घंटा धरि के रखिया हला पूरा बायोलॉजी रो पूरा फास्ट रसिया लास्ट पंत रिवीजन करी करी चलिया कोन हबो
रेडियल सिमेट्री शो करिवो होची हमर सिलेंटरेटा एंड टेनोफोरा ए दी जण होचंदी शो करिवे कोन दैट इज रेडियल सिमेट्री आरसीसी एंड बायलैटरल सिमेट्री शो करिवो प्लैटिहेलमिनेस देन जदि हमको एटी क्वेश्चन पचारे जिवो दैट इज हर्बारियम एंड बोटानिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क या भितरु जनरली कोतरे प्लांट रो स्पेसिमेन मानको रखा जाय हर्बारियम बोटानिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क which is important to store the plant specimen not the living which one is important to store the plant specimen herbarium and एटी जदि क्वेश्चन पचारे जो हर्बारियम रे तुम प्लांट रो जो हमें दैट इज तो रोज फोज आसे रोज को बही भितर रखी दे एंड रोज किसी समय चिपकी के रही जाए और रोज पूरा जदि हम कियोट रोज देला हमें जो ताको प्रेस करके रखुचे तो सेही टाइप रे जो प्लांट रो स्पेसिमेन मानको रखुचे तो कोन कोन मेंशन करूचे सेथिरे जनरली जतले प्लांट रो स्पेसिमेन मेंशन करूचे कोन कोन मेंशन करूचे वी कैन से जेमति कि हमें दैट इज डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन तार इंग्लिश नेम कोन तार लोकल नेम कोन तार बोटानिकल नेम कोन तार फैमिली नेम कोन तार कलेक्टर्स नेम कोन ये सब डाटा हमको हर्बारियम रे लिखिया लगो इंग्लिश नेम लोकल नेम बोटानिकल नेम फैमिली नेम कलेक्टर्स टू किंगडम क्लासिफिकेशन के करतिले आंसर दियो टू किंगडम क्लासिफिकेशन easy to moderate graceful gossip easy to moderate two kingdom classification को phylum sorry two kingdom classification को scientist Carolus Linnaeus then binomial nomenclature को scientist binomial nomenclature को scientist same Carolus Linnaeus artificial system of classification किए करथिले same Carolus Linnaeus RH Whittaker को basis रे five kingdom classification करथिले what are the basis that RH Whittaker नेइतिले फॉर देयर क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पाई आरएच व्हिटेकर को बेसिस नेइतिले जेमति कि सेलो दैट इज सेल स्ट्रक्चर मोड ऑफ न्यूट्रिशन आंसर को आरएच व्हिटेकर को बेसिस रे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन करथिले आरएच व्हिटेकर को बेसिस रे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन करथिले सेल स्ट्रक्चर मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एई बेसिस रे जनरली आरएच व्हिटेकर करथिले देन मते को कि व्हाट इज हां टर्म ता सुनो द इंक्रीज ऑफ मर्क्यूरी एंड डीडीटी द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ मर्क्यूरी एंड डीडीटी इन द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इट इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन बायोफोर्टिफिकेशन यूट्रॉपिकेशन कोन हबो बायो मैग्निफिकेशन परफेक्ट देन जदि क्वेश्चन पचारे जे जनरली गोल्डन राइस रे को विटामिन थाए गोल्डन राइस रे को विटामिन व्हिच विटामिन इज प्रेजेंट इन योर गोल्डन राइस कोन हबो गोल्डन राइस रे को विटामिन रे को विटामिन एनरिच्ड विटामिन ए परफेक्ट देन जो देखिबा मते को कि पार्ट ऑफ द प्लांट जनरली गोटे प्लांट रो पार्ट सपोज लीफ तो पार्ट ऑफ द प्लांट जे कि होल प्लांट को जनरेट करि परिबो तो ई पार्ट ऑफ द प्लांट को हमें कोन होय इनप्लांट ना एक्सप्लांट ना ऑन प्लांट पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच कैन जनरेट द होल प्लांट दिस इज कॉल्ड एज इनप्लांट ना एक्सप्लांट ना ऑन प्लांट कोन को आजो ताको दैट इज एक्सप्लांट एंड द कैपेसिटी टू जनरेट द होल प्लांट ए जो कैपेसिटी को कोन को आ जाय एनीवन हमें कहले कि द पार्ट ऑफ द प्लांट रो जो पार्ट होल प्लांट को जनरेट करि परिबो ताको हमें एक्सप्लांट बोली कहउचे एंड जनरली व्हाट इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड टोटिपोटेंसी बा जो प्रॉपर्टी बा जो पोटेंशियल ता पाखे अछि टू जनरेट द होल प्लांट इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी देन जनरली हमें जो एक्सप्लांट को नेगिरी गोटे मीडियम नबा से मीडियम रे जनरली न्यूट्रिएंट नबा ऑक्सीजन नबा जिबरलिन नबा तो सब जगह प्लांट हार्मोन नबा एंड न्यूट्रिएंट मीडिया नबा नेगिरी बहुत सारा प्लांट प्रोडक्शन करिवार प्रोसीजर को कोन को जाय मैक्रो प्रोपेगेशन ना माइक्रो प्रोपेगेशन जो टेक्निक रे एक्सप्लांट को हमें नेगिरी न्यूट्रिएंट मीडिया देकिरी ऑक्सीजन जिबरलिन साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन देकिरी बहुत सारा गछ दैट इज हमें प्रोडक्शन करिवाटा को कोन को जाय माइक्रो प्रोपेगेशन ना मैक्रो प्रोपेगेशन कोन हबो माइक्रो ना मैक्रो दैट इज टिश्यू कल्चर टेक्निक रे दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपेगेशन
माइक्रो प्रोपागेशन देन मते को कि ए जो प्लांट्स गुडाक जेति कि सब प्लांट गुडाक जनरली प्रोडक्शन हेले टिश्यू कल्चर टेक्निक रे माइक्रो प्रोपागेशन द्वारा जो जो प्लांट गुडा प्रोडक्शन हेले ए प्लांट गुडाक ओरिजिनल प्लांट्स आइडेंटिकल आको कोन कहै जे सोमा क्लोन्स बढ़िया क्वेश्चन को नहीं पचार जे पूरा मन रखिवो तमरो सबुथरे क्वेश्चन पचारिवो माइक्रो प्रोपागेशन ता जानिथिबा दरकार कि जनरली एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडिया देकी ऑक्सीजन फॉक्सीजन देकी बहुत सारा प्लांट प्रोडक्शन को माइक्रो प्रोपागेशन एक्सप्लांट कोन सोमा क्लोन्स कोन एंड एडा पूरा मन रखिवो इंपोर्टेंट पूरा चलो तापर मते को कि जनरली म्यूल मन अछि कार म्यूल ता जनरली कहार ब्रीडिंग भाई जो गोटे न्यू वेराइटी बा न्यू ब्रीड जो गोटे म्यूल दैट इज कोन मेल डंकी फीमेल हॉर्स ना फीमेल डंकी मेल हॉर्स मेल डंकी फीमेल हॉर्स ना फीमेल हॉर्स मेल डंकी फीमेल हॉर्स मेल डंकी म्यूल टा जोटा हमें जो खच्चर ना कोन गोटे कोएनी तो दैट इज मेल हॉर्स फीमेल डंक ना फीमेल हॉर्स मेल डंकी शुभस्मिता फीमेल हॉर्स मेल डंकी परफेक्ट मेल डंकी और फीमेल हॉर्स रो जो ब्रीडिंग टा को जनरली हमें कहचे म्यूल बोली राइट परफेक्ट मन अछि देन मते को कि जनरली हमें जो देखिबा सेमती हिन्नी बोली मन रखियो हिन्नी टा होची उल्टा दैट इज मेल हॉर्स फीमेल डंकी चलो आ गोटे मन अछि तमरो कार मन अछि जो जनरली गोटे शीप हिस्ट्राडेल बोली हिस्ट्राडेल बोली गोटे शीप थिला पंजाब रे जनरली यार ब्रीडिंग कराइतला को ब्रीड को नेकी रे शीप को गोटे नुवा ब्रीड फॉर्मेशन कराइतला हिस्ट्राडेल नामक न्यू ब्रीड रो शीप को ब्रीड को नेकी रे जनरली एको प्रोडक्शन कराइतला एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग के गोट और शीप बिकेनरी यूएस एंड मैरिनो रैम्स परफेक्ट बिकेनरी यूएस एंड मैरिनो रैम्स परफेक्ट मन रखियो कि मेरा बीबी एमती मन रखो मेरा बीबी माने मैरिनो रैम्स और बिकेनरी यूएस मन रखियो मेरा बीबी मैरिनो रैम्स एंड बिकेनरी यूएस ए दीटा वेराइटी को बा ए दीटा ब्रीड को नेगिरी जनरली गोटे न्यू ब्रीड कराइतला जोटा कि होची कोन दैट इज हिस्ट्राडेल पंजाब रे परफेक्ट तो मते कोइ कि जदी एटी गोटे आउट तुम क्वेश्चन पचरा जीवो जनरली देखिया मन अछि कार सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करिवो किए ऑप्शन ऑक्सिन जिबरलिन साइटोकाइनिन एथिलीन एब्सिक एसिड को जनरली को प्लांट हार्मोन विल प्रमोट द सीड डॉर्मेंसी कोन हबो पंजाब रे हितला बदे म्यूल टा सॉरी म्यूल कोची हमरो हिस्ट्राडेल टा राजस्थान पंजाब बदे आई थिंक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आई थिंक पंजाब देखि दो टिके कोन बा एब्सिक एसिड देन मते कोइ कि जनरली व्हिच प्लांट हार्मोन ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी को प्लांट हार्मोन टा सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करे कोन आंसर व्हिच प्लांट हार्मोन विल ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी यस सर पंजाब प्रीति जोशी एटा पंजाब मन पड़छ मोर जा कौन हम जनरली किए को प्लांट हार्मोन ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करे जिबरलिन परफेक्ट बढ़िया अछि देन मते को कि जनरली हमरो को स्ट्रक्चर व्हिच स्ट्रक्चर इज इंपोर्टेंट फॉर द इम्प्लांटेशन मोरुला ना ब्लास्टोसिस्ट ना को ए दिरा भीतर को दैट इज हम जेतो इम्प्लांटेशन हुए मोरुला टा इम्प्लांटेशन हुए ना ब्लास्टोसिस्ट टा इम्प्लांटेशन हुए Lakshmi, Gibberellin, perfect, and Gibberellin was discovered by the scientist E. Kurosa, and जो ट्रिकी गोटे फंगल that is Gibberellia fusicora रो discover किया blastocyst. Then generally blastocyst रो outer trophoblast inner cell mass भितरु को सेल टा directly attach होतला endometrium lining सो trophoblast ना inner cell mass. Next question को generally among the trophoblast and the inner cell mass which one is directly attached with the endometrium lining, that is trophoblast, and trophoblast generally syncytiotrophoblasts, cytotrophoblast and inner cell mass ta develop embryo let it generally MTP ta co trimester is safest, MTP is safest in which trimester
ता पर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम पाके रहइबो जिबरलिक एसिड रो एंटागोनिस्ट किए एंटागोनिस्ट ऑफ जिबरलिक एसिड किए एंटागोनिस्ट ऑफ ऑक्सीजन किए जिबरलिक एसिड रो एंटागोनिस्ट किए ऑक्सीजन रो एंटागोनिस्ट किए कोन आंसर फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज सेफेस्ट फॉर एमटीपी देन तापर को गिबरलिक एसिड रो एंटागोनिस्ट किए एंड ऑक्सीजन रो एंटागोनिस्ट किए व्हिच वन इज द एंटागोनिस्ट टू जिबरलिक एसिड रो एब्सिसिक एसिड देन ऑक्सीजन रो एंटागोनिस्ट कोन हो कान्हा ऑक्सीजन रो एंटागोनिस्ट कोन हो ऑक्सीजन रो जिबरलिक एसिड रो दैट इज जिबरलिक एसिड रो साइटोकाइनिन एंड ऑक्सीजन रो कोन हो बढ़िया ऑक्सीजन रो साइटोकाइनिन काई कहलो ऑक्सीजन टा कोन करे ऑक्सीजन टा बा जनरली एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करिवो बा एपिकल डोमिनेट हे जिवो लैटरल ग्रोथ टा प्रिवेंट हे जिवो बट साइटोकाइनिन टा एपिकल डोमिनेंस को प्रिवेंट करिवो ऑक्सीजन प्रमोट करिवो एपिकल डोमिनेंस को प्रिवेंट करो ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन नेक्स्ट क्वेश्चन चलो 57 ब्रूनर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन कोन हो ब्रूनर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन अरे ये क्वेश्चन उडा नो बार बार माने गोटे चैप्टर को तमे गोटे थर पढिबो दी थर पढिबो तीन थर पढिबो चार थर पढिबो घोसी हे जइतो से चैप्टर अरे स्वप्नर भी तुम जदी के पचारियो से तुम आंसर तार दे दबो एई भला पढिया जे जो माने बेसिकली पूरा भलो से जदी 1 ईयर जने पूरा प्रॉपर्ली पढिबो प्रथम दिनरु पढिया स्टार्ट करिवो एंड गोटे सीक्वेंस वाइज पढिबो तो 100% दैट इज वर्ष सरला बेल को से पाठ को पूरा कंप्लीटली मन रखिथिबो गारंटी आंसर कोन हबो दैट इज ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन द duodenum and strictly मन रखिबो generally maximum digestive glands are present in the mucosa layer but there is an exception ब्रूनर्स ग्लैंड जोटा कि सम्मुकोसा लेयर रे देखा जिवो duodenum रो सम्मुकोसा लेयर रे देखा जिवो ब्रूनर्स ग्लैंड you have to remember क्वेश्चन पचारि पारिबो which gland present in the सम्मुकोसा layer of duodenum ब्रूनर्स ग्लैंड ता सम्मुकोसा लेयर of duodenum answer perfect then which one of the following is a protein deficiency disease generally आ भितर कोटा protein deficiency disease कोन हबो सर स्वप्न मारास्मस एंड क्वेश्चरकर मारास्मस और क्वेश्चरकर भितर कोटा होची प्रोटीन डेफिशिएंसी आमे जो देखिबा सपोज हियर इज मारास्मस तो मारास्मस रे कोन हुए ना बोथ प्रोटीन और कैलोरी रो डेफिशिएंसी बोथ प्रोटीन और कैलोरी रो डेफिशिएंसी ले कोन हबो मारास्मस मारास्मस होची लेस देन 1 ईयर कम एक वर्ष रो कम शिशु मान को जदी प्रोटीन और कैलोरी रो डेफिशिएंसी हबो ताको मारास्मस हबो क्वेश्चरकर केते बळ हबो क्वेश्चरकर हबो मोर देन 1 ईयर चिल्ड्रन मान केस रे बा एक वर्ष रो अधिक पिला केस रे एंड जदी हाई कैलोरी लो प्रोटीन कैलोरी डेफिशिएंसी भलो थिबो किंतु जदी केवल एंड केवल प्रोटीन रो डेफिशिएंसी हला क्वेश्चरकर यदि प्रोटीन और कैलोरी बोथ रो डेफिशिएंसी हला ताले मारास्मस आंसर कोन हबो दैट इज क्वेश्चरकर परफेक्ट the layer of cells that secrete enamel of tooth रो एनामेल को जनरली को सेल सिक्रेट करे सिग्नल प्रॉब्लम चलिबो टिके टिके एडजस्ट करो लाइफ रे केते कोन हम एडजस्ट करिया पड़िबो वो टिके एडजस्ट करो द लेयर ऑफ सेल्स दैट सिक्रेट एनामेल कोन हबो परफेक्ट आंसर दियो अमाइलोब्लास्ट लेयर टू सिक्रेट द एनामेल हला अमाइलोब्लास्ट जनरली सिक्रेट करिवो अमाइलोब्लास्ट सिक्रेट करे दैट इज हम कहबा जदी अमाइलोब्लास्ट विल सिक्रेट एनामेल एंड ओडोंटोब्लास्ट जनरली सिक्रेट करिवो डेंटाइन ओडोंटोब्लास्ट होची सिक्रेट करिवो डेंटाइन जोटा कि टीथ इज मेड अप ऑफ डेंटाइन एंड इट होची अमाइलोब्लास्ट द पेज इज कंटेंट्स कलर चेंज हे गला कोन 1 मिनिट डिसेलेक्ट ओके तो कोन आंसर अमाइलोब्लास्ट एंड ओडोंटोब्लास्ट होची जनरली रिलीज करे बा सिक्रेट करे डेंटाइन हला मन रखिता चलो नेक्स्ट जीवा ब्रूनर्स ग्लैंड गला सेही क्वेश्चन एटा पचारला ओके चूज द करेक्ट एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पेयर
करेक्ट एंजाइम कौन हबो आंसर दियो एमडी कोसर सोनालिका पायल सोनालिका नारू एठी गोटे क्वेश्चन पचारिया सोनालिका नारू सोनालिका और कल्याण सोना एटा होची कहार सेमिडुअर वेराइटी यार आंसर कौन हबो आसीबो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करिया पई लाइपेज भूल लाइपेज इज एन एंजाइम व्हिच इज इंपोर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट एंड लैक्टोज जनरली आमे जे देखिबा ग्लूकोज गैलेक्टोज मिसिले कौन हबो लैक्टोज सो माल्टेज दरकार कौन पई ग्लूकोज एंड ग्लूकोज होची माल्टोज ग्लूकोज माल्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज लैक्टोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज so renin is casein that is renin important for the milk protein casein को digest करा पई amylase important for the protein amylase is responsible for the carbohydrate whole maltase whole carbohydrate whole so answer is ठीक अछि आ क्वेश्चन कोन पछातली तुमको सोनालिका और कल्याण सोना सोनालिका एंड कल्याण सोना ये होची कहार वेराइटी व्हीट रो वेराइटी ना राइस रो वेराइटी सोनालिका एंड कल्याण सोना जनरली कहार वेराइटी व्हीट रो वेराइटी ना राइस रो वेराइटी सोनालिका एंड कल्याण सोना these are the variety of wheat perfect these are the variety of wheat then मते को कि जया और रत्ना ये कहार वेराइटी सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस ना व्हीट जया रत्ना रो नाम जणा पयो छै इंडिया रो वेराइटी आ जदी इंडिया रो वेराइटी जनरली एटा के कहार वेराइटी व्हीट ना राइस जया और रत्ना हला सोनालिका कल्याण सोना these are the variety of wheat and जया and रत्ना these are the variety of rice perfect what is single cell protein who can say single cell protein कौन SCP single cell protein कौन what is single cell protein कौन राइस बढ़िया समझतिंगर व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन ओनली वन सेल निवेदिता दैट इज एते जो लार्ज पॉपुलेशन अछन तो सेही पॉपुलेशन को हम खाया जोगै पारुने बा कन्वेंशनल जो मेथड रहला चाष करी कि खाया जोगैबा तो इट इज इम्पॉसिबल इन प्रैक्टिकल वे सो दैट सिंगल सेल प्रोटीन जेंति हम स्पिरुलिना को धरि परिया स्पिरुलिना तो स्पिरुलिना टा को हम धरि परिया जोटा कि सिंगल सेल प्रोटीन बहुत प्रोटीन सप्लीमेंट को बा जनरली जेति की रिक्वायरमेंट अछि प्रोटीन टू फुलफिल करि परिबो किए ना स्पिरुलिना हला स्पिरुलिना टा गोटे टिके खाइ दबो प्रबल प्रोटीन स्पिरुलिना इज algae or fungi who can say spirulina is a algae ना fungi ना कोन अब स्पिरुलिना मार्केट बढ़िया बिक्री होछि स्पिरुलिना इज algae को algae ग्रीन algae ना ब्राउन algae ना रेड algae जेम हम जान छे ग्रीन algae रो एग्जांपल कोन क्लामाइडोमस वोल्वॉक्स इलोथ्रिक्स पायरोगेरा चारा देन ब्राउन algae रो एक्टोकार्पस डायरेक्टा लैमिनारम सार्गसम फिकोस स्पिरुलिना व्हिच algae who can say spirulina टा what type of algae is spirulina blue green algae perfect blue green algae चलो तो सिंगल सेल प्रोटीन आसीबो नेक्स्ट चलो पेलाग्रा डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ पेलाग्रा डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कोन हबो पेलाग्रा डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ वीडियो आसुनी नियासिन विटामिन B1 थियामिन विटामिन B2 रिबोफ्लाविन पेलाग्रा जानि परछि यार टिके वीडियो रो प्रॉब्लम होउची बट तम तो एबे केमिस्ट्री क्लास हबो 7 टारु आई थिंक स्टार्ट हबो सो हमर भी क्लास सॉरी सॉरी आसलानी बट मु क्वेश्चन 50 होछि तुम ऑडियो रे सर वीडियो आसुनी यस B3 नियासिन पेलाग्रा डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन ओके वीडियो प्रॉब्लम यस अच्छा तो मते कोई क्वेश्चन जे तुम पचरिया जनरली इन व्हिच जोन ऑफ द fallopian tube is important for the fertilization which zone of the fallopian tube is important
for the fertilization of for the fertilization को जोन टा fallopian tube रो important for the fertilization ampullary isthmus junction बढ़िया then जदि क्वेश्चन पचारिया जनरली LH and FSS these are secreted from the anterior pituitary or posterior pituitary LH and FSS are secreted from anterior pituitary na posterior pituitary कोन हबो LH and FSS are secreted from anterior pituitary or posterior pituitary आंसर कोन हबो LH और FSS LH and FSS are secreted from anterior pituitary or posterior pituitary who can say anterior pituitary then corpus luteum will secrete what corpus luteum कौन secrete करिवो corpus luteum will secrete estrogen or progesterone कौन secrete करिवो corpus luteum हैला नहीं corpus luteum will secrete progesterone perfect what are the two hormones which are actually synthesized from the hypothalamus but stored from the posterior pituitary what are the two hormones which are actually synthesized from the hypothalamus but store and release from the posterior pituitary कोन आंसर who can say oxytocin and vasopressin okay then जदि पचारिबा generally fetal ejection reflex what is fetal ejection reflex fetal ejection reflex कोन what is fetal ejection reflex voice of krishna शर्मिष्ठा केदारनाथ श्रद्धा प्रियंका संसिता संजय सर वीडियो आसुनी यस संजय टिके प्रॉब्लम अछि सो सेति पे mild contraction okay mild contraction of uterus is started from the fetal ejection reflex जोतर के fetus टा kick करे to the uterus of the mother and generally mother uterus roof that is the signal jivo to the hypothalamus of the mother and hypothalamus will synthesize the oxytocin and posterior pituitary will release the oxytocin then the oxytocin will act on the endometrium myometrium na perimetrium कोन हबो oxytocin ना generally कोट act करिवो for the parturition endometrium na myometrium na perimetrium baby birth that is myometrium right generally among the endometrium and the myometrium and the perimetrium which one is the glandular layer among the endometrium myometrium and perimetrium which layer is the glandular layer who can say glandular layer हमें कहा कोच generally endometrium myometrium perimetrium कौन आंसर glandular layer endometrium glandular is endometrium perfect then मते को कि generally what type of heart sound is produced when the semilunar valve is closed semilunar valve close होला बेले generally को type रा heart sound production हुई what type of heart sound is produced during the closure of semilunar valve then what sound of okay dub generally dub sound production हुई पढ़े then मते को कि generally अच्छा नहीं what is the pH of blood एटा last question then तमरो chemistry class एबो अछि तो chemistry class तुम माने समस्त join करो and chemistry class को enjoy करो बढ़िया से chemistry practice करो तुम एग्जाम को पूरा boost करो and आज रो सेशन जहां भी जा प्रॉब्लम हैला so that ताको एडजस्ट करबा हमें and तो सेति पय तो तुमको ओरली किछि क्वेश्चन पचरा वाला तो केमिस्ट्री क्लास तुम माने करो आई होप कि केमिस्ट्री क्लास रे एमति किछि प्रॉब्लम न हो एंड तुम भल से केमिस्ट्री क्लास करो ओके चलो गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट भल से पढ़ा पढ़ी करो देन नेक्स्ट काली देखा होबा चलो।